In this video, we are doing the test yourself of chapter 10 from page 128. The first question here is what is a spectrum? So spectrum ढेर सारी कलर्स जब आपको नज़र आ रहे होते हैं, जब वाइट लाइट डिफरेंट कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है, then that is called a spectrum. और वो बनती कैसे है? Because your light white light contain different wavelengths. और जब वो रिफ्लेक्ट होगी, जब वो किसी भी प्रिज्म में से, किसी मटेरियल में से पास होगी और वो बेंड होगी, प्रॉपर बेंडिंग होगी, तो आपके पास वो डिस्पर्स हो जाएगी इनटू इट्स कंपोनेंट्स. दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन. और जो रिजल्ट में आपको मिलता है, जो कलर रेंज मिलती है, वो स्पेक्ट्रम है. सो वी कैन आंसर दैट द कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ अ वाइट कलर आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. Different wavelengths of light are reflected at slightly different angles when passed through prism. This is called dispersion. When light splits into different colors due to different wavelength, we see all the light range. And you can see here, आपके पास white light है जो आप bulb में से ले रही हैं, and you passing it from the prism and it splits into different colors. And that is a particular range जो human eye देख सकती है. The next question is which is reflected most by a prism, red light or blue light? अच्छा, रिफ्लेक्शन जब किसी मटेरियल की होती है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो ये कह रहे हैं कि किसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बेंड होता है. ब्लू लाइट की रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेड लाइट. ब्लू लाइट एक पीक पर है स्पेक्ट्रम की और रेड दूसरी पर है. लाइट की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्शन उतनी ही कम होगी. और वेवलेंथ लाइट की जितनी डिक्रीज करेगी, रिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी. लॉन्गर वेवलेंथ, लेस रिफ्लेक्शन. स्मॉलर वेवलेंथ, ग्रेटर रिफ्लेक्शन. सो जो ब्लू लाइट है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है. रेड लाइट कम रिफ्लेक्ट करती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है. सो इट इज़ अ रिलेशनशिप विद द वेवलेंथ. राइट ऑन द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम. इसको याद करने का आसान तरीका ये है दैट विब Georg, and these are all the alphabets from the starting. So violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. And this is the sequence also. Explain why white light is refracted by a prism into colors of the spectrum. White light is a combination of different wavelengths. So जब ये लाइट रे पास करती है तो द प्रिज्म, तो सारी की सारी जो वेवलेंथ्स हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, एंड ईच वेवलेंथ प्रोड्यूस अ सेपरेट कलर, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ नज़र आती है, वो कलर्स नज़र आती हैं. और ये जो डिस्पर्जन है, ये जो सेपरेशन है, सेग्रीगेशन है कलर्स की, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्पर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज एक्सप्लेन हाउ अ रेनबो इज फॉर्म्ड. रेनबो फॉर्मेशन का प्रोसेस एग्जैक्ट वैसे ही है जैसा आपका स्पेक्ट्रम का है. ठीक है, स्पेक्ट्रम के अंदर आप कहते हैं दैट वी यूज्ड प्रिज्म to disperse the light, and here rainbow is the natural process. We are not hanging around any prisms. We have rain droplets in air and they are hanging in the air. So जब जो आपकी white light है, जो sunlight है, that passed from that droplets at a certain angle and it bends, it reflects. वो जो droplets हैं उनमें से pass करती है light, वो reflect होती है, so it produces color, ranges of color. So we can define rainbow is formed when rays of sun is scattered by a water droplet through reflection process. A rainbow is formed opposite to the sun. The water droplet act like small prisms. Light pass through these prisms and undergo the dispersion phenomena and split into 7 colors. Next question here is, if you were facing a rainbow, where would your shadow be? रेनबो फॉर्म होती है सन के ऑपोजिट. अगर आप रेनबो की तरफ फेस करके खड़े हैं, दैट मीन्स सन आपके पीछे है, that means shadow आपके सामने बनेगा. Simple. So the rainbow is formed opposite to the sun. So if you are facing a rainbow, that means sun is behind you and that your shadow will be made in front of you. This is all from this page.